गाइस, जो आज हमारी गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे एथलीट्स और ऐसी लड़कियां बहुत ही कम हैं जो इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं बहुत ही पर्सनली प्राउड फील कर रहा हूँ आज इस एथलीट की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पहला रीज़न ये है क्योंकि ये मेरी खुद बहन की तरह है। इसका नाम शिवानी है और ये सिर्फ 16 साल की एथलीट है और ये पहलवानी करती है। दूसरा, मैंने ऐसे बहुत ही कम एथलीट और स्पेशली लड़कियां देखी हैं जो अपनी ट्रेनिंग को इतना टाइम देती हैं और इतना इम्पोर्टेंस देती हैं। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो के एंड तक आप बहुत ही पम्प्ड और मोटिवेटेड फील करोगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना कैसी लगी 16 साल की एथलीट की स्टोरी आप सबको। तो आइए बिना देरी करे मिलवाते हैं आपको शिवानी से। पहले तो हमें ये बताओ कि क्या स्टोरी है आपकी, पहलवान कैसे बने आप? मैं राजस्थान भरतपुर की रहने वाली हूँ। मेरे को पहलवानी करने का बचपन से ही शौक है। जब मैं 15 साल की थी जब से मैंने पहलवानी स्टार्ट करी है। मुझे अपने देश के लिए मेडल लेकर आना है। जैसे गीता फोगाट जी और बबीता फोगाट जी मेडल लेकर आई है, वो हम सब के लिए मिसाल बनी है। वैसे ही मेरे को भी उनकी तरह मिसाल बनना है और लड़कियों के लिए मिसाल बनना है। अभी शिवानी आप बहुत यंग हो, आप स्कूल भी जाते हो, अपनी पढ़ाई भी करते हो, अपनी ट्रेनिंग भी करते हो, पहलवानी भी करते हो और सब कुछ डाइट के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हो आप? अभी तो कोरोना के कारण स्कूल बंद है, इसलिए मेरे को प्रैक्टिस पर पूरा टाइम मिलता है करने का और मैं इसका बहुत फ़ायदा भी उठा रही हूँ। और जब स्कूल खुले थे तो मेरे को 3:30 बजे जाना पड़ता था और वहाँ से मैं 6:30 बजे तक आकर अपना स्कूल चली जाती थी। और स्कूल में नींद भी बहुत आती थी, फिर मगर मैंने मन में ठान लिया तो कुछ करने के लिए कुछ होना तो पड़ता है ही। फिर स्कूल से आकर मेरी 1 बजे छुट्टी होती थी, 1:30 बजे तक घर, और फिर मैं 2:30 बजे अपने अखाड़े जाकर और जिम जाकर अपना खा पी कर जल्दी सो जाती थी। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत मोटिवेटिंग है। हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लड़कियां पहलवानी की तरफ नहीं जाती, लेकिन आपकी जैसी लड़कियां जो है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हमारे पूरे देश के लिए, ताकि और लड़कियां इंस्पायर हो और लड़कियां रेसलिंग की तरफ जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि आप मॉडर्न डे जो विमेन फोर्स है उनको आप इंस्पायर कर रहे हैं पहलवान बनने के लिए, टुवर्ड्स बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, इंडिपेंडेंट एंड एन अमेजिंग एथलीट? बिल्कुल सही कहा है। बहुत स्पोर्ट्स में लड़कियां ज्यादा मिलेगी, बस पहलवानी में बहुत कम लड़कियां मिलेगी क्योंकि इस गेम में इंजरी होने का बहुत खतरा है। घर से हम जाते तो ठीक है, मगर हमें पता नहीं रहता कि हमारा क्या टूट रहा है। इसमें घुटने में भी चोट लगती है, नी में, कमर में, शोल्डर में, कुछ पता नहीं रहता है। इसीलिए बहुत से पेरेंट्स पहलवानी अलाउड नहीं करते कि लड़की के हाथ पैर टूट जाएंगे, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरे जो पिताजी है वो भी नामी ग्रामी बहुत बड़े और बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं और मुझे ये सब मेरे मम्मी जी और मेरे बड़े भैया पूरा सपोर्ट करते हैं पहलवानी में। ट्रेनिंग के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डाइट। तो अपने डाइट के बारे में बताओ, पूरे दिन में आपकी क्या डाइट रहती है और कुछ पहलवानी के लिए क्या कुछ स्पेशल डाइट भी होती है? सबसे बेस्ट होती है देसी डाइट। अगर जितनी आप देसी डाइट लोगे उतना ही अच्छा है। ये बाहर की चीज़ें, चाउमीन वगैरह, मोमोज, ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान करती है और हमारे स्ट्रेस खत्म करती है जो बाहर की चीज़ें होती है। और मैं लेती हूँ ये बादाम वगैरह, बादाम हो गए और दलिया, अंडे, दाल और एग और 1.5 किलो दूध सुबह और शाम को गाय का। बस मेरी ये डाइट है। अनप्लग्ड एंड ऑनेस्ट की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई हैं, ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं और हम सब चाहते हैं, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो सब चाहते हैं कि आप एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करो और इंडिया के लिए मेडल लेकर आओ। लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही सोच रखा है मुझे, बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और अपने देश के लिए मेडल लेकर आना है एक ना एक दिन। आई विश ये सपना मेरा पूरा हो।
मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए मैं दिन रात एक करूंगी और मैं अपने देश के लिए जरूर मेडल लेकर आऊंगी। थैंक यू। Why? Why I can't sleep? Why is my flight cancelled? Why is it called COVID-19? Why is Mars red? Is a parasite really good? Why are Olympics postponed? Why am I so tired? Why are the toilet papers all finished? Why are there so many lives lost? Why? That's a video Google did in December of 2020. It happens to be the year where people asked why the most. In terms of uncertainty, people seek understanding and meaning. That's why in the year 2020, people searched for why way more than they've ever searched for this word. The Australian bushfire. Protest on Citizenship Amendment Act in early 2020. Prince Harry and Meghan quit the royal family. COVID-19. Janta curfew and complete lockdown due to COVID-19. The migrant exodus in India. Kobe Bryant's passing away. Virtualization became new normal. Donald Trump gets impeached. The India and China clash. Galwan clash between India and China at LAC. The movie Parasite wins all of the Oscars. Sushant Singh Rajput's passing away. Deaths. India lost some prominent personalities last year, which include former India President Pranab Mukherjee, Sushant Singh Rajput, Rishi Kapoor, Irfan Khan. Stock market crashes in 2020. India's GDP shrinks 23.9%. Some of Bollywood big names like Deepika Padukone, Riya Chakrabarti, Kangana, all in highlights, some for not so good reason. India elected to UNSC. Black Lives Matter and the protests. Farm laws and farmers protest. Kim Jong's death mystery and the rumors of him passing away. The Beirut explosion. The construction of Ram Mandir in Ayodhya. Chadwick, the Black Panthers, passing away. Mumbai Indians win the IPL 2020 despite the pandemic. Eddie Van Halen, the guitar legend, passes away. Big Ramy won 2020 Mr. Olympia. Trump loses the elections. Joe Biden is the new president of the United States of America. And finally, we have a vaccination. Life is a vicious circle. Hard time create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. History has seen similar year in 1920, and what we can learn from that is to bounce back towards recovery. That's it from Unplugged and Honest. If you find a value in this video, please share it with your friends and family. Until next time, stay unplugged, stay honest. Ronnie the King Coleman. Before I say anything about him, let's quickly take you through what the other bodybuilding legends have to say about the King. Arnold Schwarzenegger. Ronnie created a whole new dimension.
Arnold says the first time he saw Ronnie Coleman, he looked at his right shoulder and then kept on turning till the time he reached the left shoulder. And it took him a while to get there because Ronnie's shoulders were that wide, especially when Ronnie hit a lat spread. It seems like a curtain close. Ronnie's also a very graceful poser, Arnold says. Flex Wheeler. I feel bad for people who didn't get to witness Ronnie in his prime. Pictures and videos don't do justice to the electricity that was in the air when Ronnie competed. You just had to gaze into the people's eyes who looked at Ronnie Coleman and see the surprise. Sean Ray. Ronnie Coleman had things on his body that we'd never ever seen on Mr. Olympia before. Prior to him, now, and in the future, there's gonna be nobody like Ronnie Coleman. Jay Cutler. Ronnie just had it all. He was bigger than everyone. He was more conditioned than everyone. And he just didn't give a shit about anybody. He stood up on that stage and he was just like, I am here. Give me your title and I'm leaving with it. Victor Martinez. Guys were discussing the second, third and the fourth position when I joined the Mr. Olympia stage. Those are guys before me. And they never ever spoke about the first position when Ronnie was competing. Ronnie was that dominant. Dexter Jackson. Ronnie was unbeatable when he was the best. No one has ever beaten Ronnie Coleman. Dorian Yates. The Shadow says, everybody has weakness. Ronnie had no weakness. Dobson, the guy who mentored, who suggested Ronnie should compete, says, to me his strength was supernatural. It was so above and beyond everybody else. Chris Cormier. Now he's somebody who's known for his intensity and the amount of weight that he lifts. He says, I wanted to work out with Ronnie. I wanted to see how intense a champion's work ethic was. But you felt like you were in a physical fight after that workout. Dominant Mr. Olympia ever. Arnold Schwarzenegger had taken the bodybuilding sport global in the 1970s, but the weights Coleman lifted were of another level. His rivals used phrases like there was nobody you could compare him to. He just wasn't human. This guy looked like an alien, and the meat you just saw hanging all over his body. An accountant by education and a cop by profession, he had never ever thought of becoming Mr. Olympia. Started competing when he was offered free gym membership by the Metro Flex gym owner Brian Dobson. Debuting in 1992, Coleman was not taken seriously by anyone. Well, so he went on to Flex and said, "What's the deal? What is the juice?" And Flex Wheeler opened the Pandora's box, offered his advice, and perhaps that was Ronnie Coleman's first stack of steroids. And the next year, Ronnie Coleman was completely transformed into this monster that was unbeatable. Like lisp, and he's saying, "Lightweight, baby, lightweight," when he has these really heavy dumbbells in his hand, and the legendary face where he says, "Everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift heavy ass weights." And ain't nothing but a peanut. Now those phrases have motivated countless bodybuilders and fans across. Retired, and he's got multiple injuries. He's got both his hips replaced. He's got titanium
fitted in. His discs are fused together. What that means is he can't really move too well. He's got very limited mobility, but he still works out. He still loves the sport. In the Netflix documentary, somebody asks him, so what's the biggest regret that he has? And you would imagine that perhaps him lifting too heavy weights would be one of his regrets, because he can't walk anymore. But he says that in the famous unbelievable video, he's shown squatting 800 pounds for 2 reps. Now his greatest regret, as per Ronnie Coleman, is that he could have easily done more than 2 reps. With 800 pounds, he just did 2, and that perhaps is his greatest regret. Now that brings a smile on your face, that this guy is all about mental toughness and all about positivity. He's never ever criticized the sport of bodybuilding. He's never ever regretted lifting those heavy weights. He still does it because he loves. For all of you fans of Ronnie Coleman, he's done multiple podcasts, and you should certainly watch his podcast with Joe Rogan. He's done one podcast with Valuetainment, where he's named his top bodybuilders of all time. He also criticizes the modern day bodybuilders and says that the modern day bodybuilders would have stood no chance against the bodybuilders from his era. So perhaps you should watch that. He's done multiple interviews with RX Muscle as well, and then you should definitely, and I've been a fan of his ever since. So this video is truly from a fanboy. I hope you like this video. We'll continue to make more such videos. So please stay with us, subscribe, and stay unplugged and stay honest. Take care. Bye. Arnold Schwarzenegger, one of the biggest names of bodybuilding, an idol to hundreds of thousands of young bodybuilders. He has made bodybuilding the sport that is today, and until this day he continues to inspire and motivate to honor him. और अगर आप किसी भी लोकल जिम में जाओगे, ऐसा शायद ही कोई जिम होगा जहाँ पे आपको आर्नल्ड का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ नहीं दिखेगा. मैं कितने ऐसे जिम देख चुका हूँ जो सिर्फ आर्नल्ड के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे द आर्नल्ड जिम, द ग्रेट आर्नल्ड. कुछ ऐसे कंपटीशन जो लोकल कंपटीशन होते हैं वो आर्नल्ड के नाम पर होते हैं, जैसे आर्नल्ड चैम्पियनशिप, आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन. मतलब एक जो मिस्टर ओलंपिया के बाद आई थिंक सबसे बड़ा जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आता है वो है आर्नल्ड क्लासिक. So this video is going to be all about Arnold Schwarzenegger, starting from his early life, then his bodybuilding career, his accomplishments, his accolades, कुछ controversies भी. I know आप में से बहुत लोग आर्नल्ड के फैंस होंगे और आप में से बहुत लोगों ने शायद आर्नल्ड एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ रखी होगी, लेकिन के फैंस भी होंगे. So you must see this video. Talking about Arnold's early life, so he was born in Austria in 1947, and he was very much into sports, and as a teen he started his bodybuilding career. Arnold won his first championship, that was Mr. Europe in junior category, and then he moved to England. उसके बाद वहाँ पे he got famous with the name of the Austrian Oak, and the reason for that was he used to perform chin-ups on the limb of the oak tree, and back in where he was born in his native village. And of course because of his extraordinary large huge size. उसके बाद आर्नल्ड competed in a Mr. Universe Championship. अब उनकी एज 20 थी and he went on to win Mr. Universe Championship. और उस टाइम पे he was the youngest Mr. Universe to hold that title. And after winning Mr. Universe Championship he moved to US. वहाँ पे उन्होंने गोल्ड्स जिम ज्वाइन करा और उन्होंने जो वीडर के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करी. वहीं से उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन की तैयारी शुरू करी. एंड देन ही वेंट ऑन टू विन 4 times नाबा की तरफ से जो फेडरेशन है मिस्टर यूनिवर्स 4 times,
and 7 times Mr. Olympia. और इससे भी पहले बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से पहले भी एक स्टोन लिफ्टिंग कंपटीशन हुआ था एंड आर्नल्ड वेंट ऑन टू लिफ्ट अ स्टोन which was around 560 pounds, and he lifted that stone and he went on to win that competition as well. So Arnold had a very clear vision and goal. He wanted to become the greatest bodybuilder of all time. तो फर्स्ट टाइम 1969 में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया खेला, बट देन उस कंपटीशन में ही वॉज रैंक्ड सेकेंड. बट देन द फॉलोइंग कंपटीशन इन 1970 ही वन मिस्टर ओलंपिया. और उसी 1970 मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद जो उनका डोमिनेंस था बॉडी बिल्डिंग के अंदर, दैट स्टार्टेड. मतलब पूरे वर्ल्ड को एक अनाउंस कर दिया था कि आर्नल्ड हैज़ अराइव्ड. और फ्रॉम 1970 to 1974 he won all the competitions of Mr. Olympia. So after winning his 5th straight Mr. Olympia, he decided to retire from the sport. But then उस टाइम पर जॉर्ज बटलर एंड चार्ल्स गेन्स, उन्होंने आर्नल्ड को कन्विंस करा कि वो 1975 का चैम्पियनशिप भी जो मिस्टर ओलंपिया का होने वाला है वो उसको खेलें, क्योंकि उनको उस टाइम पे एक बॉडी बिल्डिंग पे डॉक्यूमेंट्री जो है वो शूट करनी थी विच वॉज पंपिंग आयरन. उस वजह से आर्नल्ड केम आउट ऑफ हिज रिटायरमेंट और उन्होंने 1975 में भी मिस्टर ओलंपिया खेला एंड ही वेंट ऑन टू विन दैट कंपटीशन एज वेल फॉर द 6th टाइम इन अ रो. However, Arnold came back from his retirement in 1980 to again compete in a Mr. Olympia competition. And his competition was not so easy this time. He was competing against Mike Menzer, who was in his prime. जो मतलब उनको एक वही ऐसे competitor थे जो उनको हरा सकते थे Mr. Universe. But then आज तक दैट इज़ अ कंट्रोवर्सी. इट इज़ सेड कि उस टाइम पे क्योंकि आर्नल्ड ने सिर्फ 8 वीक्स की प्रिपरेशन में ही वो 1980 का मिस्टर ओलंपिया भी जीत लिया था. बट देन द कंट्रोवर्सी इज़, ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे जो क्योंकि आर्नल्ड जो है बहुत ही फेमस हो चुके थे पंपिंग आयरन की वजह से, और ही वॉज ऑलरेडी 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया उससे पहले, तो कि इट्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी अवार्ड, ना कि जजिंग के ऊपर या फिर नॉट बिकॉज ऑफ द बॉडी बिल्डिंग की. जो वहाँ पे जजेस बैठे थे ग्रेड्स वगैरह पे मार्क्स वगैरह के हिसाब से रिजल्ट्स में एक्सपेक्टेड नहीं आए थे, और आर्नल्ड को 1980 का मिस्टर ओलंपिया चूज़ करा गया था. और उस रिजल्ट्स के बाद से जो माइक मेंजर थे जो रनर्स अप थे मिस्टर ओलंपिया 1980 के, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को, बॉडी बिल्डिंग जो एक करियर था उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया. वो वहाँ से रिटायरमेंट उन्होंने ले ली. रिटायरमेंट के बाद भी, आर्नल्ड के रिटायरमेंट के बाद भी एक वो आज तक एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, जो हम सब जानते हैं. और जो एक और कंट्रोवर्सी उनके सामने आई थी विच वॉज इन 1977, जो आई फील कि आई शुड ऑल्सो से अबाउट इट when we are talking about Arnold Schwarzenegger, so we should know all the details. तो 1977 में आर्नल्ड ने ये कन्फेस करा था कि जो 1970s से जो उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीते थे, उन्होंने डेना बॉल का यूज़ करा था. बट उन्होंने ये भी कहा था कि जो उन्होंने मसल ग्रोथ के लिए नहीं, मसल मेंटेनेंस के लिए करा गया था. Again went on to become a controversy. So this was all about Arnold's bodybuilding career. Now of course he has acted in so many films. He has been into politics, but then we'll keep this video till here, since we just wanted to talk about his bodybuilding career. Alright, so that's it from my side for today, and thank you so much for watching this video till the end. Stay tuned for our next videos, and until then, stay unplugged, stay honest. If you search on Google the best bodybuilder of India or the top 5 bodybuilders of India, you would find one name in that list, and that name is the most elite bodybuilders of India, one of the most decorated bodybuilders, one of the most respected bodybuilders of India, that is one and only Sangram Chogle. And many of you would not know that Sangram Chogle is an electrical engineer by profession, and he hails from a small village in Kolhapur, Maharashtra. So bodybuilding for Sangram Chogle was not a cakewalk.
He also had to go through a lot of hardships in life to become a professional bodybuilder, and his dream of becoming the best bodybuilder in India. The moment he started bodybuilding, he knew that his destiny is to be the best bodybuilder in India. Every year he trained harder, improved his intensity, dieted stricter, worked on his performance, endurance, and gained more muscle. His phenomenal symmetry, conditioning, and his engaging personality makes him a threat to win all the accolades, all the honors wherever he competes. Sangram is a nationally recognized athlete, a bodybuilder, and he has achieved so many accomplishments, accolades, the titles which he has went on to win. That has made him a top-notch bodybuilder of India. According to Sangram, bodybuilding is the product of many necessities combined properly. And that is, you need to have good God-given genetics, you need to be disciplined to go to gym every day, you need to have a discipline in your diet, you need to perform exercises in a correct way, and then you have to compose all of them in an equal way. It's not that you like one of them and then you continue doing it. There has to be an equal proportionate of all these components. Key point to remember is your body is like a car. Your engine won't do any good to you without steering, fuel, brakes, and many other thousand things. So all the things has to work simultaneously, has to work properly to get the best result. And we have always talked about this, how mental resilience plays an important role in bodybuilding. So while covering the Sangram Chogle's career, we have also come to a point wherein the mental resilience came into the picture. So he went on to win 2015 Mr. India title, defeating Murli Kumar. So just to give you some background about Murli Kumar, Murli was defeating Sangram Chogle for past few years in any of the major competitions, bodybuilding competition, and Sangram went on to take 2 years of rest. He came back harder and stronger, and he went on to win 2015 Mr. India title, defeating Murli Kumar. And what a comeback he made. He went on to become the undisputed champion bodybuilder of India. Now talking about Sangram's accomplishments, his championships, his title reigns, which he has won throughout his career. In fact, there are so many that I had to make a note of it, so I'll be reading it back to you. So the first one was 2012 gold medal in Bangkok, and Mr. World 2014 gold medal Mumbai, India, 2012 gold medal Bangkok again. In 2011 he got bronze medal Malaysia. Talking about Mr. Asia, 2012 silver medal in China, 2011 bronze medal in Bangkok again, 2010 fifth place in Bahrain. And Mr. South Asia, he won 2012 overall winner, and that was held in Ludhiana, Punjab. And talking about Mr. India, 2015 gold medal Gujarat, India, 2013 gold medal Kerala, 2012 gold medal Hyderabad, 2011 Bangalore, 2010 Goa. Federation Cup 2010 and 11 held in Bhopal and Ludhiana. Maharashtra Shri 2008 silver medal, 2009 gold medal, 2010 runners-up Mumbai, 2012 gold medal and overall winner 2015 gold medal Mumbai. So these are quite a few championships which he went on to win, which I found on an open internet. Alright, so that's it from Unplugged and Honest. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you will like it, and don't forget to share it with your friends and family. Thank you, and until our next video, stay unplugged, stay honest. Thank you. Hi all you gorgeous women, my name is Gayatri Sahdev, and today I'd like to tell you all that it's Women's Day, and I hope you guys believe in yourselves as much as I do. And I think all your dreams and your wishes can definitely come true. Mwah. So stay blessed and keep rocking. I think the main thing about being a woman is to believe in yourself, have confidence, and be super strong and classy and royal.
So there's something that I would like to share with you all. If any young woman out there aspires to be an entrepreneur, super fit and super ambitious, I would recommend all of you to first and foremost, the main thing is to believe in yourself, believe in your dream, and don't let anybody in society tell you that you do not deserve your dreams, because I feel that ambitions, once they come into your mindset, and if you think of something, you're definitely going to be able to achieve it. If I can achieve it, I'm sure you can as well. So in real time, I'd like to tell you that if you have a dream or a business or even a small startup that you want to start from your house, for example, you can definitely start it with the help of all the amazing tools that you have these days. You have digital media, social media, you have your phone, you have your camera, you have support from family, from friends. What more do you want? I'm sure every woman has the opportunity to believe and make her dreams come true. Also, when it comes to fitness, I'd like to tell you all, I am a total believer of being super fit, super healthy, and always looking amazing. And so in real time, I'd like to tell you that if you have a dream or a business or even a small startup that you want to start from your house, for example, you can definitely start it with the help of all the amazing tools that you have these days. You have digital media, social media, you have your phone, you have your camera, you have support from family, from friends. What more do you want? I'm sure every woman has the opportunity to believe and make her dreams come true. Also, when it comes to fitness, I'd like to tell you all, I am a total believer of being super fit, super healthy, and always looking amazing and sexy. So the cool part about being a woman is that you must be fit, must take care of yourself, and health is the real wealth. So let me tell you guys, if you're not fit and if you're not feeling good from within yourselves, then you're not going to be so confident. So the number 2 main point is be super fit, be more confident, and keep glowing and shining. Now, when it comes to steps that you can take to actually have your aspirations met with when it comes to society, again, all it takes is to believe in yourself. So this Women's Day, all I'd like to tell you all is believe in yourself, have enough confidence, and look super good, super sexy, and trust me, you can rule the world. I'm a total believer in womanhood, and I hope this particular video has helped you in some way. Lots of love. So I'd like to walk you through my day. I am a total morning person, so I would wake up at around say 5 or 6. I would go for a walk, I would meditate. I love eating vegetarian food, so I will have home cooked healthy food, which is, I think, the best option for all of you. What keeps me going is the fact that I eat well, I eat right, I eat light food, keeps my stomach light and flexible, and also I meditate and I work out. So when it comes to all of these lifestyle habits, I feel like I really appreciate my day. When I sleep comfortably because my day goes smoothly. What keeps me going again in life is confidence, strength, power, and the faith that I have within myself to go ahead with everything that I want to achieve. So I think that is something that keeps me going forward. And not just the coffee. Hi, I would like to tell you all that fitness is a huge part of my life, and I feel like health is wealth. So if you're healthy, looking good, looking sexy, I think that's all you want to achieve. I personally love being super fit. It makes me feel calm, peaceful, happy, and gives me an overall confidence and a boost in my day-to-day life. And I feel like something like fitness is something that you should completely focus on. So be super fit, super active. Fat burners. Those pills that can make fat melt off your body like ice cream on a hot summer day, right? Well, sorry to burst your bubble, but even the best fat burners aren't magic. They're just supplements. That means even though they're designed with ingredients that can really give you that extra boost to burn fat, they can't really replace a nice, solid, healthy diet and exercise plan. But still, they help, and hence, Unplugged and Honest is here to tell you what fat burners do and which ones you should buy. So stay tuned. Dosto, to be honest, if it's a fat burner and does not have caffeine,
it's just a waste of your money. A fat burner's most important ingredient is caffeine. The green tea extract and many other herbs, they sound good, they're perhaps good for your body, but to be honest, they aren't really doing much to increase your metabolism or burn fat for you. So what's a fat burner? Nutrient supplement that are claimed to accurately increase fat metabolism or energy expenditure, impair fat absorption, increase weight loss, increase fat oxidation during exercise, or somehow cause long-term adaptation that promotes fat metabolism. So how do fat burners work? Some of the key ingredients used in fat burners are designed to stimulate hormonal reactions in your body and to begin breaking down fat using it as a fuel source. The main ingredient in the most accomplished fat burners is caffeine, as I earlier said, which helps you in lose fat by increasing your metabolism and helping the body use the fat for fuel. Caffeine also makes you get out of that couch and gives you that energy and focus to really explode while you exercise, lift heavier weights, run for longer with a lot of focus. In the body, caffeine increases the breakdown on fatty acids that reside in adaptive tissue, also called the belly fat. Once the fatty acids are broken down, they enter the bloodstream and can be burnt down by our bodies to create energy, and that energy is then used to do stronger, longer, more intense exercise. You've got to be a little bit careful when using a fat burner. Start really small with a small serving, because the feeling that you have once you have these fat burners is not very pleasant. You have to really train and tire yourself, otherwise you'll have that feeling of nervousness and just going to look at it, okay, घबराहट हो रही है, that kind of feeling. You don't want that. So it is important to do a lot of exercise and perhaps have some meal if you're feeling that nervous feeling. It'll definitely help subdue that feeling. So some of the popular fat burners which are available on Amazon and in fact in India. Hydroxycut is world renowned. It's really potent. You can't go wrong with that. Our own Indian Muscle Blaze Burn Pro has a lot of caffeine. It'll definitely help. And my personal favorite is ProLab Advanced Caffeine. It's crazy. If you want to start off, don't start with one tab, try and start with half a tab. That's it for now. We'll again come back with more supplements for you. Till that time, stay unplugged and stay honest. Take care. Bye bye. वेलकम टू अनप्लग्ड एंड ऑनेस्ट. जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ही इज़ अ 48-year-old बॉडी बिल्डर और उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी एट द एज ऑफ 40 एंड नाउ ही इज़ कम्पीटिंग एट अ प्रोफेशनल लेवल. काफ़ी सारे टाइटल्स मेंस फिजिक के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो जीत चुके हैं. So he is Sushil Shankar, a well-renowned master category bodybuilder. So before we speak to him, let's look at some of his pictures. सुनील भाई, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए. आप कितनी देर से वर्कआउट कर रहे हैं, कितने सालों से वर्कआउट कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, नाम सुशील शंकर, मेरा नाम सुशील शंकर है और मैं पिछले 15-20 साल से फिटनेस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ. एक्चुअली मेरा करियर स्टार्ट बहुत पहले शुरू हो गया था, व्हेन आई वाज 8 और 9. मैं पहले बॉडी बिल्डिंग से नहीं, मैं मार्शल आर्ट किया करता था, ताइक्वांडो, मिक्स मार्शल आर्ट, जूडो, ये सब चीजें. और अंडर 14 तक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल काफी मेडल्स मैंने जीते हैं. दिल्ली ओलंपिक ये सब मेडल्स मैंने जीते थे.
फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा मुझे मेरे बड़े भाई को देख करके लगा, क्योंकि वो मिड 80s से बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ था, जिस टाइम दिल्ली में जिमिंग कल्चर नहीं था। देसी जिम कर उसने अच्छी फिजिक बना रखी, तो उसे देख करके मुझे लगा कि मुझे भी अपना करियर इस लाइन में बनाना चाहिए। धीरे धीरे करते करते मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी आफ्टर द एज ऑफ 40। 40 के एज के बाद मैंने शुरू किया था 7 या 8-9 साल पहले। उसके बाद प्रोफेशनली मैं इसके अंदर घुसा। स्टेट लेवल नॉर्थ इंडिया 2018 में शायद तीन बार नॉर्थ इंडिया, जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल, 3 बार नॉर्थ इंडिया, दिल्ली स्टेट और मिस्टर हरियाणा, मिस्टर यूपी ओपन कैटेगरी, ये सारे मेडल्स मैंने निकाले। हाय सर, तो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ वेट लॉस टिप्स, मसल गेनिंग टिप्स और कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स प्लीज शेयर करो आप। सो गाइस, वेट लॉस के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। बाहर का जंक फूड नहीं खाना, आपको शुगर अवॉइड करनी है और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा, और ग्लूटेन यानी आटा, इसका कम यूज करना है, बहुत कम। दिन में आप यूज कर सकते हैं, रात में आटा अगर आप छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और बात रही गेनिंग की, अगर आपको मसल गेन करना है तो उसका सबसे मैं गुरु मंत्र कहूंगा इस चीज को, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है वेट गेनिंग के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे है तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा। और उसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाने के लिए हैवी वर्कआउट बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लोअर बॉडी का, यानी थाइस एंड लोअर बैक। अगर आप इसके अंदर इन एक्सरसाइजेस के अंदर वेट बढ़ा करके एक्सरसाइजेस करेंगे तो 100% आपका मसल गेन होगा। प्लस उसमें आपको अपना मील्स को डिवाइड करना होगा। क्लीन डाइट लीजिए, अपनी प्रोटीन बेस्ड डाइट लीजिए, फाइबर अच्छा रखिए और अपनी डाइट को 2-3 की जगह 6 से 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कीजिए और हर 1.5 से 2 घंटे के अंदर अपनी एक डाइट लीजिए। 100% आपको गेनिंग होगी। और कोविड के बाद में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोविड का टाइम चल रहा है, इम्यूनिटी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। लिक्विड डाइट ज्यादा रखिए, नारियल पानी हो गया, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लीजिए और सेफ अपने आप को रखिए। देखिए, मास्क और ये सब चीजें चल ही रही हैं, बट अपने आप को हम कैसे सेफ रख सकते हैं? सिर्फ अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज से। अपनी डाइट ठीक रखिए, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लीजिए। दैट्स इट। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कौन से वेट क्लास के अंदर आपने खेला और क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? कुछ हमारे साथ शेयर करिए। सो गाइस, मैंने 40 के बाद बॉडी बिल्डिंग शुरू तो की, लेकिन मुझे नीचे खींचने वाले बहुत लोग थे। आपसे नहीं होगा, एज हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बिजनेस है, काम देखेंगे या बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाएंगे, करते करते, लेकिन पक्का इरादा था, मैं लगा रहा उसके अंदर। बहुत चैलेंजेस आए, बहुत लोगों ने समझाया गेनिंग नहीं हो पाएगी, वो शार्पनेस नहीं आएगी, उतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाओगे, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा भी लगेगा। बट मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा और रिजल्ट आपके सामने है। 40 की एज से शुरू करके मैं अब तक कम से कम 8 से 10 टाइटल जीत चुका हूँ और अभी भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। हालांकि लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेरी तैयारी है। और मेरा नेक्स्ट जो गोल है, राइट नाउ आई एम 48 और मेरा नेक्स्ट जो गोल है, मैं 50 मास्टर कैटेगरी एक्चुअली 40 प्लस की होती है और 50 प्लस की होती है। 40 प्लस के अंदर वेट कैटेगरीज नहीं होती, ओपन वेट होता है। 40 प्लस एज है, चाहे आप 100 के हो चाहे 60 के हो, सेम वेट के अंदर आपको खेलना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद भी मैंने इसके अंदर मेडल निकाले और मेरा नेक्स्ट चैलेंज है मिस्टर एशिया के लिए, जिसकी तैयारी मैंने अब शुरू कर दी है। सो गाइस, एज से कभी नहीं डरना चाहिए कि आपकी एज हो गई। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं 48 का होकर के अभी भी हिम्मत कर सकता हूँ, तो आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए और क्या चीज़ ऐसी चेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से, जिससे कि और भी ज़्यादा जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जो आपकी तरह प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बनना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसा ना लगे कि यार कि हमने इतना कुछ इन्वेस्ट करा अपनी बॉडी के अंदर, रिटर्न में कुछ चाहिए। सो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ हमारे जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग है, इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, बहुत खर्चा लगता है एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग बनाने के अंदर, बट उस हिसाब से रिटर्न इसके अंदर कुछ भी नहीं। जिस हिसाब से दूसरे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है या टेनिस है और दूसरी गेम्स के अंदर स्पोर्ट्स मैन अगर मेहनत करता है, कुछ अचीव करता है, तो उसे अच्छा मिलता भी है, रिटर्न भी अच्छी मिलती है। बट बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा बॉडी बिल्डर तैयार करने में 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा मिनिमम है। अगर बच्चे को कुछ
बनना है तो इतना खर्चा लगता ही लगता है, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट से लेकर के बहुत सारी चीजें, डाइट से लेकर के हर चीज है जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, बट रिटर्न में बॉडी बिल्डर कुछ नहीं मिलता। 2 से 3 लाख रुपए लगा करके अगर बच्चा स्टेज पर चढ़ करके कोई मेडल लेकर भी आता है, बट उसे मिलता क्या है? 10, 11, 21, 31 ये पैसे मिलते हैं, साथ में एक टी शर्ट, एक प्रोटीन का डब्बा, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर एटलीस्ट ये चीज चेंज होनी चाहिए। और जो गली गली में जिम खुले हुए हैं, सब ने अपनी फेडरेशन बना रखी है। फेडरेशन इंडिया के अंदर जितनी भी या तो एफिलेटेड हो या पेड होनी चाहिए। आप कॉम्पिटिशन करा रहे हैं तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चा कितना पैसा खर्च करके आया है, आप उसको दे क्या रहे हैं। जस्ट इस चीज को आप चेंज कीजिए। फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, जितना हमारा पोटेंशियल हमारे इंडिया के अंदर है, इंडियन बॉडी बिल्डर्स के अंदर, मैं नहीं समझता पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे बॉडी बिल्डर्स मिल सकते हैं। इतना कठिनाइयों के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों के यहाँ के बच्चे सब चीज करके दिखाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, बट हम लोग पीछे क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज। हम लोगों को फैसिलिटीज नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये चीज चेंज होनी चाहिए। अगले ने अगर 2 लाख 3 लाख खर्च किया तो 2-3 लाख रुपए कम से कम एटलीस्ट उसकी जो उसने लागत लगाई वो तो रिटर्न मिलना चाहिए। अगर इंडियन बॉडी बिल्डर्स को सिर्फ वही मिल जाए, खाली हल्का सा नाम और फेम मिल जाए, पैसा भी नहीं चाहिए, इतना रिटर्न भी वापस मिल जाए, फेम के अंदर ही हमारे यहाँ के स्पोर्ट्समैन, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई दुनिया के अंदर कोई इंडियन बॉडी बिल्डर से अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। इतना पोटेंशियल हमारे इंडिया के अंदर है। कंपटीशन के लिए तैयार होना पूरा साइंस है। कंपटीशन से 10 दिन पहले की अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताइए। किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें करते थे आप 10 दिन से कंपटीशन तक, ताकि आप जब कंपटीशन के स्टेज पे हो तो आप अपना 100%। सो गाइस, बात करेंगे कॉम्पिटिशन्स की। तो हमारी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तो वैसे तो काफी टाइम पहले शुरू हो जाती है, बट एक्चुअल तैयारी हमारी 10 दिन 15 दिन पहले शुरू होती है, जब हम सॉल्ट, शुगर एंड वाटर इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। सॉल्ट और शुगर तो पूरा छूट जाता है, बट वाटर धीरे 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 कम करते करते लास्ट के 3 डेज पर 0 हो जाता है। उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत कोक या वाटर को जस्ट अ लिटिल ड्रॉप होठों के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, अंदर नहीं लेके जाते। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा ये आसान नहीं है। बहुत से लड़कों को मैंने स्टेज पर औंधे मुंह गिरते हुए देखा, बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी इसके अलावा बॉडी पॉलिशिंग जब होती है दिल ऐसे ऐसे करता है। लेकिन हमारे अंदर, मैं पहले खेला था या 1-2 बार खेलने का कॉन्फिडेंस आ गया था, अब नहीं होता। पहले घबराहट बहुत होती थी, बट लेकिन आप चढ़ते हो। दूसरा, सारे के सारे बच्चे अच्छे होते हैं, जो स्टेज पर चढ़ने आते हैं सब अच्छे होते हैं। सिर्फ खेल होता है आपकी प्रैक्टिस का, आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। पोजिंग का सारा खेल है। सब नीचे, स्टेज के नीचे सब एक जैसे दिखेंगे, बट जीतता कौन है? और जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, अच्छी प्रैक्टिस की होगी, जो अच्छा फ्लेक्स करके दिखाएगा, अच्छी पोजिंग करेगा, जीतता वही है। तो सर, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, किसी को आपसे ट्रेनिंग लेनी हो, सप्लीमेंट्स के बारे में पूछना हो, कुछ डाइट के बारे में पूछना हो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सो गाइस, आप लोगों को मेरी किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत हो, लेनिंग में, गेनिंग में, किसी भी तरीके की कोई हेल्प की, पर्सनल ट्रेनिंग से हो या सप्लीमेंट के बारे में हो, ट्रेनिंग के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ और किसी भी जिम के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी हो, मैं अवेलेबल हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक आईडी भी है, मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय दिस वीडियो। बॉडी बिल्डिंग किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए और वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी। So that's it from us at Unplugged and Honest. You take care of yourself and keep watching our videos, liking our videos. Please do comment and stay unplugged and stay honest. Take care. Bye bye.